The sound of mallet and chisel fills the rustic landscape of Taxila, a small town some 50 kilometers from Islamabad. Sitting by the roadside under the shade of mulberry trees, men work on stones for hours on end. Taxila may look like an ordinary town, but it's a place of historical significance. It was once the spiritual and cultural hub of one of the world's oldest faiths, Buddhism, and was home to the Gandhara school of sculpture, a treasure trove of arts and crafts. Gandhara art appeared in the region in the 1st century BC and flourished till the 8th century AD. Even after the civilization faded, Gandhara art was kept alive, handed down from one generation to another. Although Taxila's population today is predominantly Muslim, its Buddhist past has had a significant impact on people's lives that's evident in local handicrafts and the flourishing stone carving industry. With Buddhist influences, Taxila sculptors produce replicas of historical stonework. One of them is 37-year-old Muhammad Sadakat, a resident of Taxila and expert stone sculptor for the past 15 years. बुजुर्गों का कहना है ना कि किसी ज़माना में किस वक्त में ये अपना जो है ना टैक्सला किसी ज़माना में मतलब संतराशों का शहर होता था। संतराशों का शहर मतलब इसमें मुख्तलिफ चीज़ें मतलब है कि हर चीज़ का अपना अपना रंग कलर डिज़ाइन जैसे तुम के टेबल होगा अच्छा वैन ग्लास होंगे तो जो कपड़े वगैरह होंगी तो लंगरियाँ वगैरह होंगी तो फिर जो है ना जी और बहुत कुछ मतलब है कि स्टैंड जो बत्ती जलाने वाले नहीं होते स्टैंड भी होते पत्थर से सब जो है ना चीज़ें नमूने मतलब है कि इन पत्थर से कमालात उनके बनते हैं. His day begins at 6 in the morning and for the next 12 hours he remains at his spot under the tree. He can finish 7 to 8 pieces a day, earning about $5 for a day's work. Sadakat lost his father at a young age and as the eldest of 5 children he has to take care of his family. मेरे मामू हजरात जो है ना उनके साथ मैं पहाड़ पे गया हूँ उधर फिर मैंने ट्रेनिंग वगैरह ली है ट्रेनिंग वगैरह मेरी हाल क्लियर हुई है तो मतलब फिर जो है ना तो उनका काम अलहदा हो गया तो हमारा काम अलहदा हो गया तो वो बोलते हैं मामू बोलते हैं मतलब अब्दुल रहीम उनका नाम है ना तो बोलते हैं कि तुम अपना खुद काम करो मैं अपना खुद काम करूँगा. The mountains Sadakat talks about are not far from where he sits. They are home to over 20 ancient sites, including Mesolithic era caves and archaeological remains of 4 early settlements. In ancient times, Taxila hosted a number of Buddhist monasteries. Its civilization reached its peak between the 1st and 5th centuries. Today, it is one of the most important archaeological sites in Asia and was declared a UNESCO World Heritage Site in 1980. ये जगह जो थी इसका जो पीरियड था ये 1st सेंचुरी एडी से 5 सेंचुरी एडी तक था 455 ईस्वी में सेंट्रल एशिया से कमला और कौम आई थी वाइट हंस उनके हाथों ये सारी तहजीब और ये यूनिवर्सिटी तबाह हो गई थी. बाद में ये जगह माशी बदहाली की वजह से ज़माने के रहम करम पर पड़ी रही. आंधी तूफान जलजले जखड़ इसके दबने के असबाब बने थे. Ramzan Abbasi has been a caretaker of archaeological sites in Taxila for over 3 decades and has become somewhat of an authority on Buddhist history, culture and way of life. He looks after Jolia, a site of a Buddhist monastery that some consider the world's oldest university. Ramzan says remains
of 4 settlements in Taxila reveal a pattern of urban evolution in the Indian subcontinent through more than 5 centuries. क्योंकि ये टैक्सला 3 दफा तबाह हुआ था, इसके 2 पीरियड इससे पहले जल्जलों से तबाह हुए थे। टैक्सला का जो पहला पीरियड था वो 6ठी सदी बिफोर क्राइस्ट, 2nd सेंचुरी बिफोर क्राइस्ट तक था, और 2nd सेंचुरी बिफोर क्राइस्ट में बहुत बड़ा जल्जला आया था जिससे पूरा शहर तबाह हो गया था। फिर अलसर नो टैक्सला को आबाद किया गया था जो दूसरी सदी बिफोर क्राइस्ट से लास्ट सेंचुरी बिफोर क्राइस्ट तक था, और वो शहर भी जल्जलों से तबाह हुआ था। ये तीसरा जो पीरियड था ना, इसमें इस तरह की कंस्ट्रक्शन हुई थी। आप देखें हर दीवार के सेंटर में बड़े पत्थर यूज हुए हैं, साइड में छोटे पत्थर। ये जब जल्जले आते हैं ना तो छोटे पत्थर शॉक ऑब्जर्वर का काम करते हैं, दीवार गिरने से रुक जाती है। और ये दरमियान में पानी का तालाब था। उस जमाने में जितनी भी बिल्डिंगें बनाई जाती थी उनके दरमियान में ब्यूटी के लिए या बिल्डिंग को ठंडा रखना मकसूद होता था, या सूरज चांद की लाइट को रिफ्लेक्शन करने के लिए तालाब बनाए जाते। Born in the year 563 BC in Lumbini, present-day Nepal, Buddha never came to this part of the world, but many of his followers settled in Taxila. इबादत गाह का एरिया था और ये 2 पार्ट्स पर मुश्तमिल था। बुद्धा की डेथ के 200 बरस बाद 272 बिफोर क्राइस्ट में ये अशोक इस मजहब का पहला एम्पीरियर बना था, तो उसने वो राख वहाँ से निकाल कर अपनी सुल्तनत के मुख्तलिफ हिस्सों में, जहाँ बुद्ध तहजीब के बड़े मरकज शहर थे जिनमें ये टैक्सला सरफरेस्ट था, ये अंदर जो मेन स्तूपा, इस तरह के मेन स्तूपा बनाए गए थे जिनके अंदर बुद्धा की थोड़ी थोड़ी राख है जो तबर्रुक बमा डोनेशन के दफन हुई थी। और बाद में जो बुद्ध के फॉलोअर लोग थे उनके लिए ये मेन मरकज बन गए थे। In 327 BC, Alexander the Great conquered Taxila, and later it came under the Mauryan dynasty and reached a great level of development. During the 2nd century, Buddhism was adopted as the state religion in this part of the world. It flourished and prevailed here for over 1,000 years until the 10th century. At the time, Taxila became an important center for culture, trade, and learning. The next period in Taxila's history was that of the Indo-Greek descendants of Alexander's warriors. And then came the Gandhara period. The great Kushan dynasty was established in 50 AD. And for 200 years, Taxila became a renowned center for philosophy and art before it was vandalized beyond repair. Those who visit the remains are struck with awe. पढ़ा है लेकिन इतना डिटेल के साथ नहीं पढ़ा हमने उस तरह। जब आके देखा तो ज्यादा अच्छा लगा, ज्यादा समझ में आई, इन्फॉर्मेशन टाइप मिली ना। डिटेल में बताई है, बाकी मैंने ज्यादा पहले देखा है कि ये जगह कैसी है। डिटेल से पहले मैंने देखे कि ये है कैसा, कैसे फीचर्स टाइप, पहले इन चीजों पे मैं ज्यादा फोकस मैंने किया। डिटेल अभी हम और लेंगे, नहीं निकालना चाहिए, सर्च करना चाहिए। इतनी इन्फॉर्मेशन, मतलब इस चीज से इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है, इतनी नॉलेज मिलती है। आई डोंट थिंक सो मशीन्स होंगी, क्योंकि वो तो बहुत पुराना जमाना था, बहुत कदीम जमाना था। मशीनें तो अब ज्यादा अब आई हैं ना। पहले जमाने में तो मुझे लगता है इनकी इंसानों की अपनी एफर्ट्स थी, और खासतौर पर उस जमाने के इंसान थे भी बड़े ताकतवर। मतलब आजकल देखें, आजकल के इंसानों को देखें और उस जमाने के इंसानों को देखें तो काफी फर्क होता है उनमें। This is Sirkap, a fortified city founded in the mid-2nd century BC. The many private houses, stupas, and temples here reflect a strong Western classical influence on local architecture. The city was destroyed in the 1st century by the Kushans, a Central Asian tribe. To the north, excavations of the ruins of the Kushan city of Sirsuk prove the early influence of Central Asian architecture in the subcontinent. These ruins of a 2,000-year-old civilization stand out for their magnificent architecture, so much so that not even the best contemporary architects can match the glories of the past. Taxila's museum houses some of the world's oldest artifacts. It has various images of Buddha
and numerous panels describing the important stages of his life. Built in 1928, the museum is home to a significant and comprehensive collection of Gandhara art dating from the 1st to the 7th centuries. Most pieces in the collection here were excavated from the ruins of ancient Taxila. But not all the discoveries made it to the museum. असल में उस दौर में वो हुकूमत में थे, पावर में थे, तो उनका वो भी चीज़ें यहाँ से काफ़ी सारी लेके गए हैं, जो कि उनके गंधारा गैलरी है, ब्रिटिश म्यूजियम है, वहाँ पे भी डिस्प्ले पे पड़ी हैं टैक्सला की चीज़ें हैं. Pakistan passed a law in 1975 declaring Taxila a protected antiquity. As authorities work to protect Taxila's historical sites, they strive to preserve their authenticity and original designs. But experts say more needs to be done. रिस्टोर करने के लिए तो काफ़ी हद तक डिपार्टमेंट बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इसमें ना, काफ़ी जगहों को उन्होंने बड़े खूबसूरती के साथ रिस्टोर किया गया है. लेकिन मौजूदा दौर के मुताबिक जो जिस तरह के आजकल टूल्स हैं, अगर वो इन साइट्स को प्रोवाइड किए जाए तो इससे ये साइट्स और ज़्यादा भी बेहतर हो सकती है. और दूसरा जो मेन प्रॉब्लम चला आ रहा है हमारे पास, चूँकि जो यहाँ के जो मुलाजमीन है उनकी शार्टेज है, इस वजह से ये साइट्स जो है थोड़ी उस तरह अच्छी नहीं है जिस तरह पहले थी यहाँ पे ना. Like many great civilizations, Gandhara may have vanished, but it remains a brilliant chapter in the human story. And today, Sadakat, heir to a long tradition, preserves the legacy of the ancient civilization with his mallet and chisel. Somewhere in the beats, one could still hear the kingdom's people, a people who built their empire and became masters of their art.